We're live. We are live, Abhinandan. Okay, hello, wonderful subscribers. We are here because it is our 12th birthday, and we figured just before the humdrum of elections are upon us, we should have a 1 hour session with the subscribers where they can give us feedback, inputs, critique, criticism, what you'd like to see more of, what you'd like to see less of, what you'd like to see us do better, and how we can improve our subscriber count so that we can have a journalist in every state or two, better still. That is our aim. So I'll let our editors, give in their remarks and a little about the journey of Newslaundry from when they joined in 2012 to now. And once we've done that for maybe 7-10 minutes each, then we can take questions, etc. So Raman sir, you want to go first? Yeah, in fact, well, I'm in this profession for quite a long time, 30 plus. And one thing which even before I came to News Laundry, I always believed in that content is the only content should speak, not us. So our content should speak. So wherever we worked, earlier I was in the mainstream media, where I faced many times we used to face problems about this that sometimes our stories get spiked. Advertisements always used to be in our mind that if whenever the story used to get spiked, so we knew why it got spiked. So when I came to this news laundry 6 years ago, uh, I first of all, I wasn't I was talking about it this morning also. I wasn't sure whether this is going to work, because the only way we had learned getting money is the ad money. But this was a novel idea, and I really liked the way the entire place was coming up, the kind of stories in all formats, podcast, audio, video, and text. So that is the time when I joined. We were very small, and in these 6 years, I really have seen ourselves growing, all because of you guys, all because of you, because our money, our revenue has come directly from you people, nothing from the ad. And and this has really uh, you know uh, put in lot of faith in me about this particular model, and this is something I want to pursue uh, for rest of my life. So that is it. Thank you very much. uh, the kind of journalism we are able to do at pursue at this point of time is only because of you, and we try our best to stay neutral as much as possible, give both sides of the story. So that's what we have tried so far, and we will take your questions, whatever you have to say, and whatever advice you have for us. We'll definitely uh, take care of that. Thank you, sir. Um, so I think we are live. You can share the link with other subscribers. Those of you who do know other subscribers. Now we will. Rohan says cake cutting. Good vibes. Okay. So Atul, your journey in journalism as a news laundry, and what are your expectations going forward? तो आज हम लोगों ने केक काट लिया अपने ऑफिस में, पूरी टीम और सारे के सारे हमारे कलीग, डिज़ाइन टीम, प्रोडक्शन टीम, एडिटोरियल टीम, सारे लोग साथ में थे। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने यही सारी बातें करी, जो मैं यहाँ पर फिर से वही दोहरा रहा हूँ। एक जिस समय मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री जॉइन किया, मुझे 7 साल के करीब होने जा रहे हैं, और उस समय मेरे न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ने का जो वो था, इमीडिएट बहुत वो था, एक ट्रिगर पॉइंट था, वो ये था कि मीडिया का लैंडस्केप बहुत तेज़ी से बदल रहा था। उसमें एक चीज़ थी कि
डिजिटल ही फ्यूचर है अब मीडिया में, प्रिंट उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टेलीविज़न की अपनी लिमिटेशन है, ये वो। तो उसमें मेरे सामने एक विकल्प के तौर पर न्यूज़ लॉन्ड्री था, उससे पहले भी मैं एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ही थोड़े समय के लिए काम कर रहा था। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट था कि एक हमारी एडिटर इन चीफ थी मधु त्रेहान, तो उनके साथ भी एक काम करने का वो था। और लेकिन उस पूरे जर्नी में जब वहाँ से शुरुआत हुई, तब जो समय बीच में ऐसा भी रहा जो कि एक कहते हैं ना कि कहीं-कहीं आपका विश्वास, कहीं भरोसा डोल जाता है कि शायद जिस भरोसे पर, जिस विज़न पर, जिस उस पे चल रहे हैं हम लोग वो उस तरह से ये सफल ना हो या इसमें उतनी संभावना नहीं है। अभिनंदन हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और ये रहे कि नहीं, यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए मीडिया को जो इंडिपेंडेंस है और इसका जो फ्यूचर है उसको बनाए रखा जा सकता है, जर्नलिज़्म का ख़ासकर। हमारे सामने ऐसी भी स्थिति आ गई थी फिर कि जहाँ पर हमारी टीम सिकुड़ के, मेरे ख़्याल से एडिटोरियल टीम तो बहुत ही छोटी हो गई थी, सिर्फ़ 2 रिपोर्टर्स और एडिटर्स रह गए थे 2-3। कुल मिला के 10-12 लोगों की टीम, ऐसी स्थिति भी आई बीच में। फिर वहाँ से एक दूसरी शुरुआत हुई, एक बाउंस बैक जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने किया। फिर हमने देखा कि हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम 50-60 लोग, और इसी मॉडल पर, यही सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल था, जिस विज़न को लेकर चल रहे थे। तो मैंने थोड़ा-सा उसको श्रिंक भी होते देखा और फिर मैंने उसको सफल भी होते देखा और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सफल होते देखा कि जहाँ पर हमारी टीम 60 लोगों की हुई, उसमें एडिटोरियल टीम भी बड़ी, हमारी डिज़ाइन, प्रोडक्शन सारी। दूसरी एक चीज़ है जो इस पूरी जर्नी में हमने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की तमाम लिमिटेशंस के बीच में जो काम करने की कोशिश की, वो बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको आप लोगों से इस उसमें शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और वो था अ, डिजिटल मीडिया बहुत डाइवर्स हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत एक तरह से कहें तो बहुत डेमोक्रेटिक भी है, बहुत सारे स्पेस देता है लोगों को। लेकिन उसमें जर्नलिज़्म की एक बहुत कोर जो वैल्यू थी, जो जो स्पेस था, रिपोर्टिंग बहुत कम है। ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत सीमित है, उसकी कई सारी वजह हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह है उसमें जो लागत है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, वो शायद और उसके बदले में जो रिटर्न है, जो रेवेन्यू है, वो दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। खर्च ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत कम है, और ट्रेडिशनल जो रेवेन्यू के सोर्सेज़ है जो कि विज्ञापन है, ऐड के ज़रिए विज्ञापन आता है, सरकार का, कॉर्पोरेशंस का, वो तमाम ज़रियों से। तो वो जो ये गैप है बीच में, उस गैप को फिल करते हुए, खत्म करते हुए, बिना किसी ऐड पर डिपेंडेंसी के, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की जो विधा जो लगभग डिजिटल मीडिया में बहुत कम थी, उसको फिर से रिवाइव करके उसको एक बड़े लेवल तक लेके गए हैं। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन के मॉडल में रहते हुए, मीडिया की इंडिपेंडेंस को बनाए रखते हुए, और सब आप लोगों के ज़रिए हमने इसमें इनकलकेट किया है, इसको आगे बढ़ाया है। अ, वो एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि केवल और केवल सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइबर्स की मदद से है। तो ये हमारी जो 6-7 साल की जर्नी में एक बड़ा मेजर पॉइंट है। हमने लगभग सारे बड़े अ, चुनावों को कवर किया, लगभग सारी बड़ी जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, और इवन कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हैं अलग-अलग जगहों पर, या पॉलिटिकल कोई फॉलोआउट है, वो सारी चीज़ों को हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड से आप तक पहुँचाया, जो कि डिजिटल में आम तौर पर आपको जो प्योर डिजिटल मीडियम है, लेगेसी मीडिया में आपको मिल सकता है, उसकी भी अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन वो हमने न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत डाइवर्स करने की कोशिश की, बहुत बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, उनको इस मौके पर बधाई देना चाहेंगे। 12वाँ हमारा जो जब सालगिरह का मौका है ये, तब उनको एक बधाई फिर से, उनको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। वो इस पूरी जर्नी के हमारे साझेदार हैं, उस यात्रा के हमसफ़र हैं, हम हमराही हैं, तो उन सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू अतुल। तो Manjul आपको has अपने Manjul has joined and हाँ, left a comment. Thank you, कमेंट या Manjul. तो थैंक्स मंजुल। मंजुल कहते हैं न्यूजीलैंड की सफलता बहुत आशा जगाती है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू मंजुल, आपको भी बधाई, और हमारा न्यूजीलैंड्री टीम का हिस्सा होने के लिए आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो विशाल कुमार, गौरव, आपके क्वेश्चन, सिद्धार्थ आपके क्वेश्चन, विल बी टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो
Shwet, हमारे social media head, और Priyali, हमारी producer. The comments that are coming on the screen and the questions that you're posting, can we have the comments also here, or is that separate? If that's possible, let me know. So, because the comments एक देहरादून से आया था, love from Dehradun, which is हाँ, देहरादून के 2 लोग आए हैं, so special love to guys from Dehradun because I'm from Dehradun and Abhinandan's from Dehradun. So everyone from Dehradun gets more love from us. हालांकि आज रमन से बोल रहे थे देहरादून में अपना घर बेच दो, वहां तो दारू पीने अलाउड है, लेमन पीने अलाउड है, कुछ भी नहीं होगा वहां तो अभी Raman sir was speculating on the future of Dehradun. Yeah. Because there's a silly law where they're saying that on dry days you can't use your mini bar. At home. At home. check करेंगे आप किसके साथ live कर रहे हैं, आप क्या दारू पी रहे हैं कि नहीं पी रहे. So आप please keep the questions coming in. I'm guessing in the comment section on the where we are streaming this. और वो questions हमारी team pick up करके यहाँ हमें दे देगी. We can answer questions. So you can tell us what you'd like us to talk about, and then we can take those questions once everyone has told us about their journey and their expectations. Manisha, award-winning journalist, आप बताइए. So before I say this, Siddharth has just messaged saying that joined the subscription of TNM Newslaundry recently. So thank you so much, Siddharth. That's really special and nice of you. Okay, so I'm gonna complete 10 years in Newslaundry this year. I joined in 2014, right after the Modi government came to power, and I was with the DNA back then. And in fact, Raman was my boss there. And I think in the run-up to 2014, it was kind of clear for us how things are going to change. There were newsroom discussions about how much we'll be able to put out, what are the kind of things that we can say, not say. And I felt as a young reporter back then, and so much of our news, when I joined journalism in 2009, and 2008 was the slowdown year, and 2009 we were feeling the repercussions of slowdown even within the news industry. So there were layoffs, there was a lot of anxiety in journalism for young journalists in terms of, job security. And I always felt that these conversations that journalists were having that pertain to the news industry, there was no one reporting on us. So at that time, there was the Hoot, and I think Newslaundry had come in 2012. So I used to regularly read these two websites to know what's happening within our industry, what are journalists saying. And I always felt that there's a need for a platform that talks about us as a news industry. We talk about everyone. We talk about politicians. We talk about companies, we talk about bureaucrats, sports people, Bollywood, but we don't talk about ourselves enough. So post 2014, I felt like, okay, this seems like a really cool place. I used to like watching Clothesline a lot. I used to also really enjoy reading Anand Ranganathan's pieces back then. And I thought, okay, this seems cool. And there was an opening and I joined in 2014. And the first story itself landed us in a suit because it was on India TV and Rajat Sharma sent us 100 crore notice. And everything was up in, there were a lot of tense conversations. I think at that time, Madhu was the editor-in-chief, so he had certain complaints on how had he demanded money? I don't recall what the notice was. 100 crore, give 100. And a lot of people, yeah. And I think Madhu at that time, she was the editor-in-chief, and he had said that this reporter never reached out to me for my version. And I think Madhu had some trust issues with me back then because I had just joined. So she was like, okay, pata nahi kaun hai, isne kar diya hoga kuch without. So she asked me, can you send me the messages? And at that time, I didn't have a smartphone. I used to have that Nokia wala phone. So I was like, I can't send you screenshots, but I'll send you. So I took Aruna, who used to be my colleague back then. I took his phone, took pictures of my Nokia phone ka messages that I had sent to Rajat and sent to Madhu. And then Madhu was happy because she said, okay, you've done the right thing. You gave him 24 hours. You said you wanted to be fair. So, she gained a bit of trust in me. She didn't think koi pagal aa gayi hai. She's done a story, 100 crore notice aa gaye. So that was my first week itself was, it was very interesting. And I just remember, Abhinandan being very excited. I think he's just always very excited whenever there's a combat situation. So rather than being upset or being tensed or questioning me, he was just like, it's okay. We'll take it.
So, and that's been the spirit in Newslaundry really for the last 10 years. Whenever we've had notices now. I mean, we have cases now with India Today, with Times. We've had IT notices, but the spirit has always been to take it head on, carry on doing what we are doing while being responsible. A lot of emphasis, and it's not that we are cavalier and we're like, "Acha, jo bolna hai bol do." There's also behind all that fun and everything that you see, there's a lot of careful consideration. There's a lot of thinking. There's a lot of emphasis in being fair, even when we're making fun of people. So that is there. And I think the reason why we've been able to carry on in this way has really been because the source of our strength comes from people who believe in us, support us, and pay. These are not people who just click, share a story, or just like a video, or although that's very important. But beyond that, they pay for what we do. And this year, last year, thanks to these guys, we were able to cover stories that not even the mainstream media covered, like Manipur. Had reporters there for 20 days. The Odisha accident, the communal tension in Uttarakhand, the Uttarakhand ecological disaster, Himachal ecological disaster. All this backed by just people who pay and support us. So it's really, really monumental, I think, what we've been able to do here. And yeah, just the spirit is all thanks to you guys. So hopefully we get more and more of you. A lot of people who are watching us may not be subscribers. This is a good time to subscribe to us and become part of our family. So yeah. 12 साल बाद ताकि आप भी कह सकें हाँ. 12 साल का In fact, today the finance minister has shown the front page ads of the Congress. जो have the paper here, only front page ads निकाले हैं. Says taxpayer के खर्चे पर ये political messaging कर रहे हैं. मैंने तो बोला सभी कर रहे हैं. हम तो कब से बोल रहे हैं नहीं करनी चाहिए. So the whole idea is that unless journalism is supported by the people, it cannot serve the people. Now, we will keep taking questions. You can keep your questions coming. So Rohan says cake cutting, good vibes. Thank you, Rohan. So Siddharth says early years when subscription was low, how did you sustain? So Siddharth, when we started, Newslaundry was a passion project. It was a project that came out of Bhadas. It wasn't a thought through. In fact, there is an old video of mine at the Caravan office where, when we had just started, where we were supposed to make a presentation that what is your revenue model, etc. So in that, I have said our revenue model is dekhi jayegi. I have, we had a production house because we had started a production house in 2000. Me and a friend of mine who was also in Newstrack. We both used to work for Madhu in Newstrack, and the production house had become fairly robust. We had several hit shows. So we had an office, we had cameras, we had editors. And by 2008, 9, 10, it was clear that media's damadol ho raha hai iska scene. So we had started this website because we didn't have to pay for an office, because it wasn't a separate company. It was just part of, we were doing it, so ek extra graphic designer kar lo, and we were just carrying on because there wasn't that much of overheads. Then when Madhu came on board, she came on board because then she became a partner in Small Screen, because Newslaundry wasn't a separate company, mind you, then. So that money supported us for a while. And then we started the subscription gateway. Technically, we didn't have a great tech team, so it kept failing. So we had some subscribers, but the tech was bad. People were not so, internet penetration itni nahi thi. And then Omidyar came in at that time with, I think, 3.1 crore or something. So that was a one-time investment. In fact, people bolte rehte na, wo fund karta hai. Many people don't understand how investment work. Investment doesn't work कि हर साल आपको चेक लेके भेज देते हैं. एक बार इन्वेस्टमेंट आती है, वो आ गई, अब वो खत्म हो गया तो खत्म हो गई. वो हर साल नहीं भेजता कोई पैसे, है ना. ये पॉकेट मनी नहीं होता. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कई लोगों को समझ नहीं आती. So then we sustained, but then we said now, and then after 2-3 years, Newslaundry became a thing. So then it was, यार एक side पे time pass के लिए नहीं चल सकती. It has to be run separately as a separate proper company. So then the production house and Newslaundry separated. And then, so for the first 2 years, from 2012 to about half of 2014, 15, Manish, even when you were there, I used to be shooting shows half the time, right? I was traveling most of the time shooting travel shows.
तो I used to be doing stuff remotely. मैं दिल्ली आता था 8-10 दिन के लिए, फिर मैं shoot के लिए निकल जाता था. So it was only, I think, 2014 second half. I think you were directing also. You were I at was that point directing shows, yeah. I was I mean, there directing was a High series I remember which was yeah. Yeah, I was directing that show for Fox Travel. I was directing 2-3 shows at that time. Then I quit. The production house became a separate company. This became a separate company, and then we became completely separate entities. And then it was full-time focus on this. So that is how we survived the first few years. So I hope that answers your question, Siddharth. Jitesh says, congratulations, New Zealand team, for being a shining beacon of journalism for so long. Big love from Canada. Yo, Jitesh. आजकल कनाडा और हमारे संबंध अच्छे नहीं है, but still love you too. Very sweet message from Shrikant also says, congratulations, been a subscriber for the longest time. Although I did drop out for a while due to bhadas with something Abhinandan said. But What then was came it? back. I missed you all too much. What did I say? Can you also just post what I said, so I know what was the what did I say to trigger you? Then there's one more Go question. back, and that's what matters. Shrikant, Vikas thank says, you. I have one genuine question. How come you guys are able to use videos from other channels like the ones you used to criticize? Yeah, it is legal. It is called fair use. There was an old case, actually. There's a Supreme Court order, which also we cited in the High Court, when India Today took us to court and we won the case. So that was basically, there was an old order that someone had reviewed a book. And the book was, so suppose I'm reviewing a book. I won't republish the full book. But the bit that I'm criticizing or critiquing, I'll take that para and say, देखो ये जो इसने लिखा है, इसका ये critique है. So the same logic applies for IP on others. We are not pretending to be them. We are saying, look, this is what they have said, and this is why it is flawed or problematic or whatever it is. So it's called fair use, and there is precedence in court, in Supreme Court, on what is fair use. It is defined. So yeah, it is legal. What are the other questions? Manisha, can you please tilt down your screen a little bit? Too much headroom, I guess. Manisha, what's the first time you fell in love with Republic? That's for you. अरे बड़ी लंबी कहानी है. ये प्रेम कहानी Times Now के time से, but I remember the first time really focusing on Arnab was the Sheena Bora case. We had done this piece also, that 17 spectacularly silly things we heard during the Sheena Bora case, which became basically, it was just people sitting together and Arnab and speculating on everything from like her spirit to her death to her mother to whatever. That was like the first things I remember really watching closely of Arnab. Then there is one question which says, of course, there Ajit says Newslaundry is the best series I've watched. Great work. Thank you. Thank Ajit. you from team. पंकज कहते हैं हिंदी में बोलो सर. ये एक उत्पल दत्त का डायलॉग था किस फिल्म में, हिंदी में बोलो, हिंदी में. यार हमारे कई मित्र साउथ से ज्वाइन कर रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, कुछ बाहर से, तो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ताकि वी कैन जितने ज्यादा लोगों से बात कर सके. फिनिक्स राइडर कहते हैं, हाउ टू केयर फॉर योर सेफ्टी एज अ रिपोर्टर. तो लीगल सेफ्टी तो हमारी गारंटी है. एज अ रिपोर्टर इन परस्यूट ऑफ अ स्टोरी, एनी लीगल इंटिमिडेशन कम्स, वी विल नॉट अबैंडन एनीथिंग. बाकी सेफ्टी के लिए आई गेस एक तो वो मैनुअल है जो सबको देते हैं हम, वो जो RSF ने दी थी. बाकी सेफ्टी का कुछ स्पेशल, आई मीन रिस्क है तो रिस्क है, आई गेस. एनीवन, हाउ डू Shrikant was upset because of your conclusion on using pellet guns in Kashmir. Right. Okay, Shrikant, I'll just come to that also. On the safety issue. No, I I mean, mean, yeah, Raman sir. I mean, whatever risk is there, I mean, it is there. Basically, say, I'll just give you an example. If, say, somebody is going for a long time to cover, say, with the army in the jungle, then we know that malaria can happen. So we'll take those precautions. If we are going to a riot-like situation, so there we take care. Like we went to Manipur. So in Manipur also our reporters had taken all kind of care. But yes, the risk is there always. But one instruction to all reporters is, no story is worth more than your safety.
Yes. Two More than things your our reporters are told: A, you will not compromise your safety, and two, you will not compromise your dignity. And these two things, and I'll give you an example. You know, someone I had tweeted the other day, जब वो एक young सा reporter हर्ष मंदर के ऑफिस में घुस रहा था, फिर उसको निकालने को बोला गया था वगैरह. तो I happened to be taking a walk there. तो मैंने ट्वीट किया था, it is, I don't remember exactly, but the indignity people like Arnab subject young reporters to is disgraceful. So some people said, why are you blaming Arnab? इसका भी तो कोई अकल होगी वगैरह. I mean, I get that. You cannot completely put out, but जब I happened to be walking past that road that time. Before that video, I saw that video when I got back to office, और फिर मैंने उसका वीडियो देखा. जब मैं चल रहा था, एक यंग सा लड़का आया, सर आप अभिनंदन है. मैंने कहा हाँ, प्लेजर टू मीट यू, मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैंने कहा थैंक यू, आप रिपोर्टर हैं? हाँ मैं रिपोर्टर हूँ. फिर मैंने उसकी गाड़ी देखी, उस पर रिपब्लिक का स्टिकर लिखा था. सर आप रिपब्लिक से हैं? He said हाँ. तो जब उसने बात की, बहुत रीजनेबल था, डिसेंट बंदा था. फिर मैंने उसको वीडियो पे देखा क्या कर रहा था वो. अब वो 22-23 साल का लड़का, वो तो वही करेगा ना. जब मैं न्यूज ट्रैक ज्वाइन किया था, अगर मधु ने बोला होता निक्कू तू कपिल सिब्बल के घर पे धावा बोल दे, मैं बोल देता यार, मुझे क्या पता. मधु को पता होगा ना, तो 55 साल की है, उनको एक्सपीरियंस है, तो बोल रही होंगी, ठीक ही बोल रही होंगी. तो that is what I meant. So you don't compromise your dignity. I feel, and you don't compromise. No story is worth your safety or your dignity. Then what are NL's plan? अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था that is News Minute ad free? नहीं, it is not ad free yet, लेकिन उसको ad free करना है. विघ्नेश और धन्या से हमारी कई बात हुई है कि भाई ज्यादा सब्सक्राइबर्स, उनका इतना पावरफुल ब्रांड है, इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, even they should get off that because you know, Dhanya was from the broadcast. They started off with an ad funded. उनका बहुत बढ़िया ट्रैफिक था, लेकिन उनकी भी यही कोशिश है कि अब वो भी completely सब्सक्राइबर मॉडल हो जाए. Mama Guru has said, I love Modi, but I also love you people. Thanks. You don't have to choose. Exactly. You can- प्यार बांटते चलो. I think Dhruv has a question. Why do you change the voice when you play videos from those channels? Do we change the voice, Manisha? Sometimes we fast forward it. Sometimes if the clip is, Fast forward. you know, we just sometimes fast forward it if it's a little too long or something. Acha, Dhruv was acha, that was Dhruv's question. Shrikant was upset about he disagreed on my view when I changed my view on the use of pellet guns after talking to the security expert. Yeah, okay, right. I got a lot of feedback on that. You can listen to Let's Talk About Kashmir. That's where we discuss this. Sir, ये सवाल आया रेनू का. Can we have some more economics being covered, constituency-wise scorecards of MLA MP? Yeah. It is part of our plan. Obviously, I mean, there are 500 plus constituencies. We cannot go to each constituency, but yes, you will definitely. We will come up with some novel ideas to give you, a good view of economics, what people think about it. But a report card kind of story, from each constituency is not going to be possible. So, But because of the we have a really amazing new project that I'm personally very excited about. It's an NL Sena project. We can hear you. Yeah, we can hear you, Manisha. Carry on. Can she not hear us? We can hear you. Manisha. I'm hearing myself for some strange But reason. we can hear you. But can someone just text her that we can hear her? We can hear you, Manisha. Yeah, we can hear Manisha. You can continue. So I'm personally very excited about this new NL Sena project that we have come up with, which is going to be looking at the key schemes of the Modi government and assessing them and what their impact has been, and looking at really data in terms of implementation and its reach. So that is not, it's part of economics in the sense that there's budgetary allocation to these schemes. It's Modi's 2.0 report card. It's an NL Sena project. You know, Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana. These are reasons that BJP often gives for why they're doing so well in elections, state or center. And they're really the centerpiece of their electoral success. So a good 10-year assessment with a lot of data. We have two guys who are going to be really looking at a lot of data in this. So that you should definitely check out. It's an NL Sena project. Please
contribute to it, because like NL Sana is where we get our subscribers to fund a project that we can carry on, a reporting project basically. So that will cover some of what you're saying. Focus on schemes. ये आपसे सवाल है अतुल कि ये रजा पूछते हैं संजय धृतराष्ट्र संवाद का आइडिया कहाँ से आया? ये तो हम लोगों ने कई बार इस पर बात कर ली है पहले भी। ये मैं जल्दी से शॉर्ट में बता दूंगा। अयोध्या में जब 2020 में नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने गए थे पहली बार मंदिर का भूमि पूजन, तो उस समय आडवाणी को नहीं बुलाया गया था, और आयरोनिकली जब फाइनल उद्घाटन हुआ तब भी आडवाणी को नहीं बुलाया गया, लेकिन उसे सीधे कह दिया गया कि हम निमंत्रण तो दे रहे पर आना मत, चुपचाप उधर ही बैठे रहना आप। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया था कि आडवाणी जिनको आर्किटेक्ट माना जाता है अयोध्या में, वो रथ यात्रा लेकर चले, फिर 2 बार लेकर चले, दूसरी बार उन्होंने मस्जिद ढहा दी, और वो सब के बाद और जब मंदिर बनने की बारी आई तो आडवाणी को लोग भूल गए, वो दिल्ली में बैठे थे। तो जो अयोध्या में हो रहा था वो आडवाणी को कैसे पता चलेगा, कैसे जानेंगे वो? तो उस कॉन्टेक्स्ट में धृतराज संजय बेसिकली महाभारत में 2 कैरेक्टर है जो कि दिल्ली में बैठे, हस्तिनापुर में बैठे थे जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई चल रही थी 18 दिन की। तो धृतराज देख नहीं सकते थे, लेकिन संजय को ये था कि उनको ऐसी कुछ शक्तियां, ताकत थी कि वो यहीं से बैठ के पूरे युद्ध का लाइव, जो हम कह सकते हैं, जो जिसे हमारे संगी भाई लोग कहते हैं कि वो लाइव टेलीकास्ट के पहला उदाहरण है संजय, और सीधे लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे देख के। तो वो युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते रहते थे युधिष्ठिर को। तो मैंने कहा कि जो अयोध्या में चल रहा है उसका आंखों देखा हाल यहाँ पर सुनाया जाए, आडवाणी जी को, वहां से ही आया। तो पुष्पिंदर मिश्रा कहते हैं टिप्पणी इज ऑसम, लव द हफ्ता एंड न्यूसेंस, सीइंग यू गाइस मेक्स मी फील दैट देयर इज समबडी हु स्टिल आस्किंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू पुष्पिंदर, थैंक यू। Praveen Then- has said, I've been following NL for long since Madhu started her show. I didn't have significant salary to subscribe to, but since last 2 years, I managed to subscribe consistently after I got my appraisal. Thank you. Wow. Thank you, man. That's amazing. फिर there few अब मैं comments यहीं से पढ़ रहा हूँ। संजू बोलती हैं, नहीं संजू बोलते हैं, continue good work, hope the tribe grows and thrives. Phoenix Rider पूछते हैं, when you were interviewing GD Bakshi, did you realize that he was trying to say national security is superior to collateral damage? Phoenix, actually मुझे याद नहीं, वो इंटरव्यू काफी टाइम पहले हुआ था, तो I don't remember exactly all that he said. But एक चीज मुझे स्ट्राइक की थी कि कैसे also after that interview he stopped going on air for a while, if you remember, कि कैसे जो ब्रॉडकास्ट चैनल का जो फॉर्मूला है, it brings out the worst in people. जब आप उनसे अलग से बात करें, many of them are reasonable, लेकिन the desire to come on every night, मतलब दूर क्यों जाना, कहीं हमारे पहले सहयोगी जब हफ्ता पे होते थे बड़े रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स लेते थे, अब आप उनको प्राइम टाइम पे देखिए क्या बन गए हैं। वो चीज ही ऐसी है, वो आपको वैसा बना देती है। रितंबरा कहती हैं अतुल चौरसिया टिपिंग बेस्ट, सैटायर, आयरनी ऑल डन ब्रिलियंटली, एंड न्यूसेंस बाय मनीषा, सुपर, थैंक यू रितंबरा। निखिल बोल रहे हैं टीवी न्यूसेंस इज नॉट रेगुलर, मनीषा। Sorry, I was unwell last week. In fact, I was doing a live, but I just couldn't recover. So yeah, but we'll try and be very regular. रोस्टर कोस्टर कहते हैं how many calories does Manisha burn when she does the show? 1000 kinds of emotions have to be displayed. It's very hard work. वही तो exercise है। None. I don't think I burn any calories doing that. AIM ISC Bank said, what about Deshpak being AdSense dependent? I don't really understand what AdSense works, but yeah, to each his own. मैं कहता हूँ सब अपने अपने तरीके से अपना फॉर्मूला निकालो। Try to do journalism. हमारे हिसाब से एड पे डिपेंडेंसी जर्नलिज्म से दूर कर सकती है। कई लोग सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन आई थिंक अलग अलग चीजें हैं। आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हो कि आप एक शो बिल्ड कर रहे हो, तो हर चीज का अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपको इंस्टीट्यूशन बिल्ड करनी है, मुझे लगता है आपको एड फ्री रहना पड़ेगा, नहीं तो वंस यू गो डाउन दैट रोड यू स्टार्ट स्लिपिंग स्लोली। क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री को मेरे बाद भी चलना है। हम सब जब ना रहे न्यूज लॉन्ड्री में, बाकी जब चलाएं वो भी ऐसे चलता रहना चाहिए। और अगर आप सिस्टम ऐसा बना दो कि कोई भी आए
सिस्टम ही उसको ऐसे चलाएगा, फिर एड से डिपेंडेंस हटाना पड़ेगा. So that is the whole idea. Anyone has anything to say? I'm just going over the comments. So will someone just take over from me so I can identify the questions? Good reporting. Are you looking at YouTube or you're looking at? I'm looking at YouTube. I'm looking at YouTube. I Media was का actually looking at YouTube. If you want, I can keep looking at YouTube and you can look at the side wala thing. हाँ ठीक है. तो you can अंकित बोलते हैं hats off to your Hindi vocabulary Atul. I've rarely heard such kind of words that you use. Thank you. हाँ, हम भी बहुत सीखते हैं. Correct. Parth, can we see a magazine like Caravan? यार print की regulation बहुत अलग होती है. मैं आप सबको बता दूं. Manisha, I'm getting off YouTube. आप YouTube देख लो please. You keep coming to me every now and then and I'll take some questions. So news is a heavily regulated industry. कौन इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोसीजर क्या होगा, क्या आपको डिलिजेंस वो करना पड़ता है, क्या आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, प्रिंट के लिए अलग है, ब्रॉडकास्ट के लिए अलग है. तो नहीं, यू विल नॉट सी न्यूज लॉन्ड्री एज अ हार्ड मैगजीन. दैट इज अ सेपरेट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एटसेट्रा. लेकिन Sachin has asked this question which we get asked often, so maybe we should take it. Do you address concerns about potential bias or echo chamber effects within your subscribers? What steps are taken to maintain diverse range of perspectives? I see that in comments, but not significant. I think editors can take that. Raman sir, कैसे मतलब bias को कैसे address कर सकते हैं? Is that you? Is that your phone? No, in fact, bias, all of us have views. I mean, to say that we are completely unbiased, that will not be right to say. So, how we can stay unbiased in a story, giving both sides of the story. I mean, if say we have a story in Manipur, we are writing about Maithis. So and there is an attack. The police was lax or something. So we try to give both sides of the stories, and try to bring that kind of narrative. So stay unbiased. So that's what we can do. I mean, the best way of being unbiased is giving both sides of the story. That's it. Yeah, so look, with reports, it's fairly simple. Like I gave you that example of Madhu asking me whether I had asked the person, give them a chance to respond or not. So that is one thing for reports. There's just no question of what we need to ensure is to be fair and accurate in what we do. As far as opinions are concerned, you would be surprised, subscribers actually ask us for more diversity. Often our subscribers, it is not as if ki sare left liberals subscribe kar rahe hain and now they only want their views to be heard, or they only want to hear their own views or what they agree with. In fact, our subscribers, a number of times they write to us and say, can you just get different voices? Can we hear a different perspective? Can you get someone from the right? Can you get someone from the center right? वो अलग बात है, right में कोई आना नहीं चाहता और कोई बहुत से लोग बुलाने लायक भी नहीं है. But center right, voices we try and often get. तो ऐसा नहीं है कि subscribers want their views. You'd be surprised how open news consumers are. On Twitter, it seems polarized. On social media, it seems polarized. But a lot of people just want to consume news and just want to think differently about issues. I think a lot of people are open about that. It's not that. And another thing is sometimes you may find us unbiased. One thing you need to be very clear. Anybody who is in power will be under our scrutiny. I mean, so the establishment is going to be under our scrutiny. So if Congress is in power, Congress will be under our scrutiny. So right now the BJP is there for the past 10 years. So you will see many more stories of the government. So that is not unbiased, but that is very natural to report, about somebody who has got power and who has got lots of resources on their hand. So we need to review them. We need to keep them under check. और within न्यूज लॉन्ड्री भी बहुत डाइवर्सिटी एडिटर्स की. इट्स नॉट कि हम मिलके सब चीजों में एग्री करते हैं. हम बहुत डिफरेंट सोचते हैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे.
You know, it is just कि mainstream media इतना right wing हो गया है, रोज जिहाद, रोज love jihad, land jihad ये हो रहा है, that we appear to be like left or something, but we're just not doing that kind of shit. But doesn't mean we have similar views on issues. We can be very different on economics, on politics, on even, you know, parties when we discuss. Like we have, I don't think we all think the same. Yeah. Also, Shrikant is काफी asking one question. नहीं काफी Shrikant is काफी asking. Sorry. हाँ सॉरी नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि काफी हमने अच्छी प्रशंसा ले ली है। एक आध कुछ लोग आए हैं गाली उनके पास कम गालियां भी वक्त ले ली। है, तो एक हाँ। रजत राणा करके नौजवान हैं जिनके पास काफी टाइम है। पहले वो कहते हैं 218 लाइव व्यूअर्स, हमारे 218 बहुत है यार रजत, हमें दबंग नहीं बनानी, 218 बहुत है हमारे लिए। फिर कहता है आएगा तो मोदी ही, अच्छा है आएगा तो मोदी, हमारी रिपोर्टिंग वही रहेगी। लेकिन एक बात बता दूं, उसके बाद जब जो आएगा ना आपके बाकी रिपोर्ट मीडिया वही करेंगे अगली सत्ता को जो इसको कर रहे हैं, फिर आप कहीं आगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2014 से पहले द पीपल हु वर सेइंग, अरे मुझे खूब व्हाट्सएप आते, इवन यू नो राहुल रोशन दैट हेट मशीन हु रन्स ऑप इंडिया, आके हम बोलते थे हाँ आज डिस्कशन हो रही है, हाँ हाँ आ जाता था, जब भी हम बोलते आ जाता था क्योंकि तब हम ही थे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, तब हम ही प्यार करते थे। सत्ता बदली, हमारा तो रवैया वही रहा सत्ता के प्रति। सडनली दे सेड तुम ऐसे हो गए, मैंने कहा हम ऐसे नहीं हो बेटा, तुम बदल गए हो। तो ठीक है आएगा तो मोदी तो आए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहते हैं इस सूद हराम तो आ ही गए अपनी, मतलब इन्होंने दिखा दिया इनकी कहां तक थिंकिंग है। रजत, यदि आपके पास इतना टाइम है, जिनको आप इतना हेट करते हो, आप जाके उनसे सीखो जो आपको कुछ सिखा सके। हम टुच्चों से आप कुछ नहीं सीख पाओगे बेटा, आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर एक और व्यक्ति कहते हैं वेयर इज इट, कोई ईवीएम के बारे में पूछा जा रहा है, इज इट रियल थ्रेट? यार आई डोंट नो, वो हमने हफ्ता में बात की है, बट आई चर्चा रियली नहीं सुनिए, आप चर्चा सुन लीजिए। अजीत यादव, ईवीएम इज रियल थ्रेट और नॉट? I mean, I don't have a position on this because it's, I mean, I don't know. No, in fact, we had former Chief Election Commissioner on our Hafta, Qureshi, and Qureshi himself said that EVM is not a threat. He said that, so I think I'll go by what he says. इनफैक्ट हमारा चर्चा जो 300 एपिसोड था उसमें बहुत डिटेल में हमने बात करी है। हृदेश ने, जिनने इलेक्शन कमीशन कवर करा है, उन्होंने बताया भी कि कैसे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है हैक करना, या कि बटन यहाँ दबाया और उसको वोट चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। what he was saying from what he is, so you should watch that episode. Yeah, but I will, so I don't have a position on this till I really look threadbare, because it's way too complicated. I've tried to understand from various people. It's a little hard to kind of figure this out. Oh, this I'm is just going by. in कहते हैं self-congratulatory uppercaste hipster who thinks ad is all that is wrong with media. That's not all we think, Willin. Yeah, I'm too old to be a hipster, as is Raman. So I don't know about Manisha and Atul. But yeah, that's another thing that's wrong. I mean, yes, I'm from privileged caste, and we should have more diversity. We have more diversity than most media houses, but yes, we could do more. But yeah, this is one of the things that's wrong. If you have a better idea, please put it. I'll read it out. We'll start taking ads if you have another formula and another structure in mind. But I'll give you some honest advice. Just getting on YouTube and payloading bhadas through comments doesn't add to your intellect or in any way. It doesn't add to you. You will go back a diminished person. You will not go back a more empowered person. You'll feel good for a while कि मैंने गाली दी, but कल आप सोचोगे यार मेरी यही हैसियत है कि मैं मतलब इस पे गाली देता रहता हूँ, आपका कुछ उद्धार नहीं हो रहा। कोई आके न्यूज लॉन्ड्री गाली दे रहा है, किसी का हमेशा मन जब मौका मिलता है नेहरू को गाली दे जाता है। हर आदमी अपनी मतलब यूट्यूब किसी के लिए बन जाए, किसी के लिए पार्लियामेंट बन जाए, जो जहां मौका पा रहा है बस। How to avoid being in echo chambers? यार ये तो थोड़ी one has to make an effort themselves, because you have to identify. I would suggest you read, longer things. I think echo chambers get formed more जब आप आदत बनाते हो सिर्फ tweets और Instagram posts पढ़ने का।
अगर आप लंबा पढ़ो ना, एक थोड़ा डिसिप्लिन भी बनता है कि पूरा, अब जग्गी का जो भी कमेंट्री आजकल वो काफी टाइम्स के लिए लिख रहा है, या जैसा ही दीपक, आई थिंक ही डज अ लॉट ऑफ व्हाट ही सेज इज easily refutable, but you have to take the pain of reading something that's long. Get off WhatsApps, and if you just start reading something that's little longer, you'll automatically get out of the echo chamber, because then you will want variety. You will not want to, like, for example, I used to, I can't read Tavleen Singh anymore because it's same thing again and again. I want something else. Money variety mangta hai. So the best way to get out of the echo chamber is read slightly longer form stuff. Somebody has said, why don't you do more satire shows? It helps with reach. हाँ, अभी 2 हैं यार. We'll start more. सैटायर शो में टाइम और एफर्ट बहुत लगता है, राइटिंग में, प्रोडक्शन में. तो रिपोर्टिंग के लिए भी तो कुछ हमें. बसंत को कंग्रेचुलेशंस आया है फ्रॉम समवन की ग्रेट रिपोर्टिंग, तो थैंक यू. ग्रेट. Yes, we have amazing reporters. एक किसी ने पूछा अभी ऊपर. Sorry, go ahead. बोलिए. एक किसी का सवाल था कि वो कौन सी 3 किताबें आप रिकमेंड करेंगे लिटरेचर या उसकी. ऐसे तो मतलब बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आमतौर पर 2-3 जो किताबें जो लगता है कि अगर हिंदी में इंटरेस्ट है आपको तो श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ. और एक यूसुफी हैं, पाकिस्तान, मतलब हिंदुस्तान से चले गए थे पाकिस्तान. उनकी एक किताब है, उर्दू में उसका नाम है आबे गुम बेसिकली, और वो बड़ी दिलचस्प किताब है. हिंदी में भी वो उपलब्ध है खोया पानी के नाम से. तो वो भी बहुत ही टॉप क्लास, उसमें सैटायर भी कह सकते हैं, लिटरेचर भी कह सकते हैं, फिलॉसफी भी है, और साथ में पार्टीशन का जो पेन है वो सब भी झलकता है बीच बीच. तो ये वो किताब है. इसके अलावा राही मासूम रजा की किताब है आधा गांव, अगर वही जिन्होंने पूरी महाभारत की सीरीज लिखी थी, तो उनकी किताब आधा गांव भी बहुत मतलब मुझे पसंद है. प्रेमचंद का कुछ भी पढ़ सकते हैं, प्रेमचंद की कहानियों में अगर वो हो. मंजुल कहते हैं मुश्ताक यूसुफी. मुश्ताक यूसुफी. There's a very sweet comment for you, Atul. बोल रहे हैं, big fan of Atul sir. I am from Banaras and I wish we had the same way of talking the way he has. Sir, do you talk the same way in real life also? ना. वो शो के लिए ही है. वो शो के लिए ही है. मतलब इससे पहले कि कोई गलतफहमी पैदा हो, मैं सारी गलतफहमियां खत्म कर देना चाहता हूँ. आमतौर पे तो अतुल ऐसे बात करता है जैसे अब क्या क्या कहें हम. लेकिन एक्चुअली एक अजीत कहते हैं दैट कैन वी फोकस मोर ऑन जुडिशरी. एक्चुअली अजीत, 2 बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, लाइव लॉ और बार एंड बेंच, जो जुडिशरी पर ही रिपोर्ट करती हैं. तो अगर हमें जुडिशरी पर करना हो, वी हैव टू गेट लॉयर्स. मतलब दैट्स इट्स ऑलमोस्ट अ सेपरेट वर्टिकल. इट्स लाइक स्टॉक मार्केट्स, व्हाई डोंट वी रिपोर्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स. उसके लिए आपको अलग स्किल सेट, अलग पूल ऑफ पोटेंशियल रिपोर्टर्स चाहिए होंगे. तो और वो काफी सिग्निफिकेंट है. आप अगर लाइव लॉ और बार एंड बेंच देखिए, मतलब जितने स्टाफ चाहिए आपको रिपोर्टिंग करने के लिए, और ऐसा स्टाफ जो लॉ समझता हो, वो एक पूरा अलग सा ही वर्टिकल है. तो अभी वी जस्ट लाइक टू ग्रो ऑन द पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस फ्रंट ओनली. लाइव लॉ तो हिंदी में भी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है मेरे ख्याल से. पता नहीं बार एंड बेंच है. हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं. पर हम जैसे हमने चंद्रचूड़ कुछ हम करते हैं कभी, एट द इंटरसेक्शन ऑफ जुडिशरी. जैसे हमने बहुत लॉन्ग फॉर्म अच्छा पीस किया था कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ की जो ट्रोलिंग होती है काफी रूटीनली, वो किन चैनल्स से आती है और किस टाइप की होती है. लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड होते थे, नॉट माय सीजीआई, so that was an interesting investigation we had done with the University of Michigan. Then of course media cases we always cover. कोई भी केस मीडिया से अगर रिलेटेड हो और कोर्ट तक जाता है तो वो हम जरूर ध्यान देते हैं उस पर. Critically analyze the independence of judiciary. That I'm sure that can be done, and I think we have certain projects in mind. What are the Supreme Court orders that came in the last 5-10 years?
but that is an article. We can do an article or two like we do about judiciary and about certain cases, but to do court reporting as a regular thing is a slightly different kind of space. Video reports from Kashmir. Can we expect video reports from Kashmir? I think there's one happening, if I'm not wrong, Raman sir. Koi Kashmir se video report ho rahi hai? Yeah, Manisha is following that. We are going to रिपोर्ट get हमारी आ रही है. We also want to send somebody from here, so let us see. हम ये भी चाहेंगे कि कश्मीर, एक तो पहले हमारी एक रिपोर्टर वहीं पे स्टेशन होती है, निधि सुरेश, जिसने 1 साल वहां पे थी. शी डिड सम वेरी गुड वर्क. लेकिन अभी हम शायद भेजेंगे, स्पेशली इलेक्शंस के आसपास, क्योंकि दैट विल बी इंटरेस्टिंग. नॉट फॉर जनरल इलेक्शंस, लेकिन आई थिंक वहां पे भी होने वाला. ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट से सितंबर तक करना है आपने, है ना? दैट वाज व्हाट दे सेड. You have to have the elections in Local Kashmir. elections, So, yes. yeah. So that will come. There's a question कि can we have a subscriber in Pune? आपका, I mean, अभी तो पूरा रूट हमारा बना नहीं है, लेकिन पुणे में आप जाएंगे? वो जो we do that show election में, if you do, because पुणे में, बॉम्बे में किए हमने 2 सब्सक्राइबर मीट, तो कुछ लोग बोल रहे हैं पुणे में भी अगर कर लें कभी, तो just keep that in mind जब आप अपना route बनाएंगे. हमारे रिपोर्टर प्रतीक पुणे में रहते हैं, तो मे बी वी ठीक है. अराउंड दैट टाइम एक स्टॉप शायद we'll try. एक चीज ये भी है कि डिपेंड ये करता है कि कहाँ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स किस शहर से हैं, ताकि वहां करने पर लोग आ सकें. सुमान पूछ रहे हैं कि doesn't the case filed by media houses bother you? These cases cost money and time. You can get the money from NL Sena, but this may come to you in the form of subscription. Yeah, it may have. लेकिन I think अगर आपको न्यूज करनी है, न्यूज देखिए, हम सब ने अब एक एक्टिव चॉइस की है न्यूज की. अब अगर ये चूज किया है तो दिस इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं ना. अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पान की दुकान खोल लिया, जूस स्टॉल खोल लें, जो आपको अक्सर हफ्ता देना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. इट इज नॉट फैक्टर्ड इनटू योर बुक्स, बट दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो अभी जो हालात हैं हमारे देश में, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो दैट उसके बिना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे कि कृष्ण जी ने गीता में बोला था ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इट इज यू डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल. So that is what we focus on. What others do, they can do cases, we'll fight it, but we will not stop doing what we do. I mean, the options are either you let the cases come and you fight them, or you say, "ठीक है, हम नहीं करते." Second option is not on the table for us, so that only leaves one option. So it's just by elimination. And we don't get cases because of our mistakes. I mean, our stories are absolutely fine. So we don't get any cases because of that. That is something to note. None of our stories have landed us in any kind of legal trouble. It's satire shows now with the media. Well, one of them did, with that Pratik had done on, but we won that case on Lok Satta. No, not Lok Satta. So it wasn't our mistake. I mean, somebody who that. So we Sakal Times defamation था. Right. Actually, आज हमें बात कर रहे थे. Tinjnehat Cookie says, would you be covering the Ladakh issue? Sonam Wangchuk has announced a fast unto death. I don't know about this fast unto death, but we were just discussing the story कि इतना underrepresented है media में. पता नहीं if we can get a ground report from Ladakh, but you will hear about it on Hafta for sure from someone who knows that space. But ground report तो भेजना पड़ेगा किसी को अगर. We wanted to. In fact, we had identified one reporter also, but she's no longer there. तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना. But let's see. Maybe we can try. कोई वहाँ पे local अगर कोई media कारगिल में कोई हो तो maybe we can try. ठीक है. We are live for another 5 minutes because Vana gets, so we can extend it to 7. There is someone says, please can I give you stories about Gulzar Saab. Another day, Ajit. Today it's about journalism and Newslaundry and what to do. Keshav says, why not take YouTube ads? It won't affect your coverage. Yeah, that is if you want to
अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गिव यू एन आइडिया, कभी यूनिट लिंक्ड प्लान मत लेना, या इंश्योरेंस लो या इन्वेस्टमेंट प्लान लो। जब आप मिक्स करते हो ना 2 प्लान, तो एक ना एक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो उसी तरह trying to get people to subscribe and pay for news, it's going to be very difficult to convince them if you take YouTube ads. And if you take YouTube, आप क्या झंडे गाड़ लोगे? आप YouTube ads लोगे, फिर slowly आपका डिपेंडेंस अगर उन पर होगा, वो तो ट्रैफिक पर डिपेंडेंट है। तो फिर जैसे अभी एक यंग मैन वाज सेइंग, सिर्फ आपके इतने लोग आए हैं, तो फिर हम ऐसे तमाशे करेंगे ताकि और लोग आए, ताकि हमारा रेवेन्यू ऊपर जाए। अभी हमारा फोकस है लोग जो जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं वो आए। तो YouTube का जो डिपेंडेंस है, इट्स अ स्लिपरी स्लोप इन माय व्यू, बट आई मीन it is, I mean, you should have multiple revenue sources. I mean, I'm not dogmatic about anything, but I think when a brand is new, its positioning has to be pure. Later it can, be a little more hedged across various revenue streams, but to begin with, it has to have a very pure positioning. Somebody's asked us for our plans on Lok Sabha. For sure, we're going to obviously cover Newsminute and Newslaundry will cover the elections together. We will be unveiling our plans very soon by the end of this month. To begin with, like I said, we have an NL Sena project that is going to assess key central government schemes and how they have performed over the past 10 years. I think it's going to be very data rich, very conclusive. And in fact, there'll be no scope for any subjectivity or anecdotes, and it's going to be purely data driven. So check that out. Also, there is a question that Caravan has done a story on army torture. I haven't read the story, but I saw the post on it. I'll read it. And he says, how come there's no discussion on this? Once we've read the story, we'll probably get Hartosh on Hafta at some point or the other. But I right now haven't read the story yet, I must be honest. Has anyone read that story yet? No. No, I haven't read it. But I know the case. I've read the reports in Indian Express, the torture case, where they are going to be tried. That case is already open out. That newspaper reports, yes, we have. Then why is Indian media on both sides, be it right or left, so poor on actual secularism and how it's be covered? Well, I think secularism is a concept that means different things to different people, and also the context matters. So I think right now it's fashionable to look at it as a bad word. Bad word. So yeah, then we have. Do you think BJP will be successful in harming the PSD? I don't know what that is. NL member from UK, congratulations, guys. Do you plan to continue NL interviews in future? I think last one was in 2023. NL interviews के बाद हुआ नहीं इस साल, एक भी नहीं हुआ. नहीं, NL इंटरव्यू हुआ है ना. अभी हमने बायजूस का जो उस पे वो इंटरव्यूज पाइपलाइन में है हमारे अभी. बायजूस का है एक दैट अलीगढ़ बॉय है. मनीषा का आने वाला है विद श्रीनिवासन जैन, सुप्रिया शर्मा एंड मरिया अलवी, तो वो चला जाएगा. हाँ, वो अभी इनफैक्ट लव जिहाद किताब पर हमने it'll be a long one. 1 घंटे का तो होगा ना मनीषा? 1 घंटे का, yes. Also Varun Grover का एक इंटरव्यू next week I'm doing his directorial debut movie आने वाली है. हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी. Yeah. Can we get perks on suggesting people to subscribe? पार्थ, आपने हमारा एक आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे. हमारे पास बहुत बढ़िया किताबें हैं ऑफिस में, तो ये थिंकिंग जब भी कोई किसी को सब्सक्राइबर बनाएगा, हम उनके चॉइस की 3 किताबें भेज देंगे उनको. तो ये ऑफिशियली हम अनरोल करेंगे this scheme, but yes, that is something that we are planning. So we have 1 more minute. Anyone has anything more to add before we say goodbye, and a big thank you to all our subscribers who joined us? Manisha, Raman, Atul. Thank you guys for joining us. Please continue to support us. A lot of you on YouTube come and watch our shows. आप लोग न्यूज़ देखते हो, टिप्पणी देखते हो, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हो. बहुत से लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, so please subscribe to newslaundry.com, the website. You get lots of perks. You can listen to our paywall stuff like NL Hafta, NL Charcha. You can listen to long form podcasts, interviews, support our work.
जैसे कि हमने कहा, we are completely ad free. So your support really matters. This is really going to matter over the next few years, especially as things change. So please support, and thank you so much for being here, all of you, all 200 of you. And we are coming up with a new product. It's fortnight tabloid newspaper of 24 pages, Yes. which is going to be there for our Prime subscribers. Virtual, not physical. Virtual. Digital. या सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिन लोगों ने यहाँ पर बधाइयाँ दी उन लोगों को भी, और कोशिश करें कि कुछ लोगों को रिकमेंड करें, सब्सक्राइबर बनाएं और अपने मनपसंद की अच्छी किताबें यहाँ से ले जाएं। हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम 12 साल के हो गए हैं। अब आप और अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लिख के तरक्की करके जब आप कमाने लगें तो सब्सक्राइब करें। तब तक अपने अंकल आंटी मम्मी पापा को बोलें आप सब्सक्राइब करो, आपके कोई भाई बहन कमा रहे हों। क्योंकि जब तक आप जर्नलिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कभी भी आप उठा के देख लीजिए, इसीलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मीडिया जब खत्म हो गया वहां डेमोक्रेसी बची। कोई एक भी देश नहीं है दुनिया में, और कोई एक ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है दुनिया में जहां मीडिया का एक हिस्सा बहुत क्रिटिकल ना हो और सिग्निफिकेंट चंक। तो आप ये देख लीजिए और फिर आप फैसला कर लीजिए आपको किस किस्म के देश में रहना है। So for those reasons and many more, pay to keep news free. Thank you to our wonderful producer Priyali for putting this together, and the entire team. I don't know who all helped you with this, and Shwet, our social media lead. And thank you Atul, Manisha, and Raman. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great night, and thank you for your support. Forever grateful. Pay to keep news free. धन्यवाद।